if we have to see about Indian architecture, भारतीय वास्तुकला या भारतीय शिल्प कला देखें, आर्किटेक्चर, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर इज ए स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन. ये एक विकास का प्रक्रम है. आप देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर अभी तक कैसे कैसे विकास हुआ. फ्रॉम द एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन टू द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल तक इंडस वैली सिविलाइजेशन से स्लोली वी हैव सीन आर्किटेक्चर एक प्रकार से विकास की प्रक्रिया से आगे बढ़ा है. द बिल्डिंग्स एंड स्कल्पचर्स हैव ए नैरेटिव टू देयर ओन. तो जितने भी बिल्डिंग्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, उनकी अपनी एक पूरी कहानी है, शुरू से लेकर अंत तक कैसे विकास हुआ है. द इमर्जेंस एंड डीके ऑफ ग्रेट एम्पायर्स, द इन्वेजन ऑफ फॉरेन रूलर्स हु ग्रेजुअली बिकेम इंडिजिनस. आपने देखे कि कई एम्पायर इन इंडिया में आए, ग्रो किए, धीरे धीरे डिके हुए, और इंडियन एम्पायर्स भी ग्रो हुए और डिके हुए, धीरे धीरे ख़त्म हुए. फॉरेन रूलर्स भी आए, अटैक किए, यहाँ पे रहे और धीरे धीरे भारतीय बन गए, यहीं के इंडियन बन गए और यहीं की आर्ट एंड कल्चर के साथ मिक्स हो गए. तो दैट इज एन आई सेड दैट नाउ इट बिकम इंडिजिनस. द कन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट कल्चर्स एंड स्टाइल्स, और इसकी वजह से व्हेन द फॉरेनर्स कम, डिफरेंट पीपल कम टू इंडिया, तो यहाँ के आर्किटेक्चर और स्कल्पचर के स्टाइल और उनके स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर के स्टाइल मिक्सअप होके एक डिफरेंट, बहुत अच्छा ऑरा का कल्चर और स्टाइल डेवलप हुआ. आर ऑल रिफ्लेक्टेड इन द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर. और ये भारत में विभिन्न जगहों पे जाएंगे तो इंडियन आर्ट एंड कल्चर, स्पेशली आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर में आप विविड डिफरेंस, क्लियर कट डिफरेंस आप देख सकते हैं कि यस, ये कैसे कैसे विकास की प्रक्रिया में इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ये हमारा इंडियन आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर डेवलप हुआ है. नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर. फर्स्ट वील सी एंशियंट इंडिया. इन द एंशियंट इंडिया फर्स्ट वील गो एंड सी इंडस वैली सिविलाइजेशन, that is an Harappan civilization, you can say Harappan art and culture. So Harappan architecture and sculpture we'll have to see. After that there is a Vedic period and so many other come in ancient, but that time there is no much development of art and culture in the form of architecture. But when the Mauryas come, thereafter Mauryan art developed. After the Mauryas some small rulers came, but during that small art and culture developed. But after that there is an, I said that period is known as post-Mauryan. Means after the Maurya there is a Sunga dynasty, there is a Kushana, Sakas, ये सारे वंश हैं. And after that there is, I said, Gupta's age, golden age of India, Gupta's art. And during that period when it is something is happening North India में, जब when it is happening in the North India, in the उत्तर भारत में हो रहा था, तो that time also something is happening in the South Indian art also. So in the ancient period, if you'll see, there is an, I said, clear-cut, I said, division is like Indus Valley civilization, Mauryan art, after that post-Mauryan art, Gupta's age art, and then there is an what? South Indian art. Now thereafter coming after the ancient India, it is coming of medieval India. In the medieval India, the two important, I said, dynasty is the Delhi Sultanate dynasty and the Mughal dynasty. And during that Delhi Sultanate 1206 to 1526, there is a development of Delhi Sultanate architecture and sculpture, in which you have heard about. वहाँ पे सुना होगा दिल्ली सल्तनत में आपने स्लैव डायनेस्टी, जिसको हिंदी में गुलाम वंश कहेंगे, there is a खिलजी डायनेस्टी, देर इज न तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, ये डिफरेंट डायनेस्टी यहाँ पे ग्रो हुए थे. और उस समय आर्ट एंड कल्चर, उस समय की सोसाइटी, उस समय की इकनॉमी और उस समय का आर्ट एंड कल्चर कैसा हुआ, उसके अनुसार से आर्ट एंड कल्चर में स्पेशली आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर कैसे विकास हुआ, इवॉल्व हुआ, दैट वी कैन सी. मुग़ल आर्ट, बाबर के बाद जो मुगल्स, द डिफरेंट, I said that outsider come to India, that during that period Mughal art has been developed. So that is in the medieval India. And in the modern India we can see there is an Indo-Gothic architectural or sculpture style.
Indo-Gothic means it is a combination of Indian as well as Western. Indian as well as Western, Indo-Gothic. And there is an also, it is in a pure Neo-Roman. Another that we can say here it is Neo-Roman style of architecture and sculpture, different art and culture. In the Neo-Roman style, we can say like there is like Greek type, Roman type. You can see that there is a very long column based pillars are there, very large wall without any kind of painting and all. So there is an, I said that this kind of Neo Roman style also with the British and then other foreigners come, then the Neo Roman style is also pure of this Greek and Roman. Another one it is Indo Gothic style where is the Indian and Western style has been mixed. This way, the classification we can see in the ancient India, in the medieval India, as well as in the modern India, architectural classification has been taken place, and that ये आपको पढ़ना है आपके different competition exams के लिए.